ये लंदन का लड़का जो मॉडल है, बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये कैसे चालू हुआ कि आप यहाँ से उठ के सीधे वहाँ गए हैं? थ्रू मॉडलिंग मैंने काफ़ी लोग को मिला। टीवी में कभी प्लान नहीं था आने के लिए। सांप का किस्सा बताओ मुझे आप, क्या हुआ वहाँ? सांप आ गया वो हाउस में? ओ सांप, ओ गॉड। बिग बॉस के बाद वे खतरों के खिलाड़ी पे आ रहा है। आज द फर्स्ट कंटेस्टेंट टू बी साइन फॉर खतरों के खिलाड़ी। 11 साल के थे शायद, when your dad was sick। इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसको अचानक व्हीलचेयर में आ गया तो ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। ही वाज वेरी अपसेट अबाउट द फैक्ट दैट ही वाज इल। तो आपने तो एक टेम्पलेट सेट कर दिया, जो भी सीधे हैं वो लोग भी एंटरटेनमेंट रोड पे जा सकते। तो आप सजेस्ट करेंगे जो लोग को अवेयर रहना चाहिए? But for the people who are coming from gaons and city like this, want to come and work in Bombay, come with a backing. I've always been spiritual. I've always been a Sai Baba. मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरनम गुरु महाराज गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय। Rajiv Aditya, welcome to Soul Sync. Thank you so much. Thank you so much. Where do I start? You have like such a wide spectrum. कितना है? एक तरफ आपका Bollywood entertainment world providing such a great entertainment for people, and the other end of spectrum, amazingly spiritual. And overarching thing, जो मैं observe किया, is the ultimate humbleness. And How sweet. it's beyond sometimes when I observe you, the kind of humbleness and service, motive that you have towards people. कोई ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, बुरा नहीं, so much of positivity. तो जैसे मैंने आपको बताया, there is so much of like a wide spectrum that I want to cover, and this is what I've observed anyway. पर आपको आपके बारे में बताना हो और इंट्रोडक्शन देना हो तो आप क्या बोलेंगे? See, I think आपने पूरा कवर कर लिया है। मतलब बॉलीवुड से बिलोंग करता हूँ मैं, but that's a secondary thing. I think in life the first thing is I'm a human. मैं ह्यूमन हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, भगवान को बहुत मानता हूँ। आई थिंक दैट मेन थिंग इज ह्यूमन ह्यूमैनिटी। आई थिंक दैट्स द वे आई ऑलवेज लाइक टू कम अक्रॉस दैट आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। माई जॉब इज इन बॉलीवुड, माई जॉब इज टू एंटरटेन, माई जॉब दैट्स माई जॉब बट आई गेट पेड फॉर। एक्चुअली असली इंसान जो मैं हूँ, एक ह्यूमन हूँ जो इज हियर टू स्प्रेड हम्बलनेस, काइंडनेस, केयरनेस, look after my family, be spiritual, serve God, and at the same time entertain, make people laugh. तो मेरा बहुत वाइड स्पेक्ट्रम, as you said, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। जो मैं टीवी में हूँ मैं घर पे नहीं हूँ, और जो मैं घर पे नहीं हूँ मैं टीवी में हूँ। सो इट्स वेरी डिफरेंट फॉर मी, बट आई थिंक यू कवर्ड इट वेरी वेल। आपने बहुत अच्छा कवर किया। बढ़िया है। आपने फिर से हम्बलनेस का नज़ारा किया, और मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मैं इंसान को काफ़ी नज़दीक से देखा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ लाइक गुड 1 month, क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स हम लोग किए हैं साथ में। पर ये सब बात तो करेंगे ही हम। लेट्स गो बैक टू योर चाइल्डहुड। आपका क्या, कहाँ से है आप, बॉलीवुड में कैसे आ गए हैं? सी ना, बचपन से ऑब्वियसली आई एम बोर्न एंड ब्रेड इन लंदन। मैं यहाँ ही हूँ, मतलब पैदाइश मेरे यहाँ हुई है। एंड आई थिंक दैट बीइंग इन लंदन हैज़ एक्चुअली मेड मी अंडरस्टैंड लाइफ मच मोर, विच इज़ वेरी वियर्ड बिकॉज लोग बोलते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको बहुत ईजी आसान है। मतलब पीपल इन इंडिया थिंक बीइंग बोर्न इन लंदन इज लाइक यू बोर्न विद गोल्ड एवरीवेयर, कि सोना है, हर हीरा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। माई लाइफ ज़्यादा टफ है यहाँ। एंड व्हेन आई वाज बोर्न ऑब्वियसली वेंट टू स्कूल, बट एट अ वेरी यंग एज माई फादर केम वेरी सिक। Like when I think was 11 or 10 or 11, became very, very sick. He was a businessman traveling the whole world, and we had a lot of factories in Africa and in India, and it was a very nice time period. But when he became sick, it became very tough for us because my mother was working. He obviously stopped traveling, and he was in a wheelchair at the end. It was very sad, and I think at that time I had to grow up very quickly. So at the age of 18, I was the first Asian model, when I was half my size, who used to do a lot of international fashion weeks for a lot of the international brands. तो मैं बहुत सारा फैशन किया, मिलान मैंने किया, मैंने काफ़ी मैंने किया था। दैट्स माई एंट्री इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। मतलब वही था कि मतलब एक ही इंडियन था वो टाइम पे। मतलब टुक 2001 और 2 1-2 की बारी कर रहा मैं, जब मैं 16-17 साल का था, जो मैंने मॉडलिंग शुरू की थी। एंड आई वाज माई टॉप ऑफ माई गेम इन 2004। तो मतलब मैंने बहुत काफ़ी मॉडलिंग की फॉर मेनी बिग ब्रांड्स, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एंट्री टू बॉलीवुड, कि मैंने काफ़ी एक्ट्रेस के साथ काम किया था। बट जब मेरा फादर का देहांत हुआ, जब उसका डेथ हुआ, तो आई अंडरस्टूड कि ये बहुत सस्टेनिंग चीज़ नहीं है। यह चीज़ मुझे इतना
पैसे नहीं देगा. वो टाइम बहुत अच्छा था, obviously it got very quickly. So I started investing in things. मैंने एक business शुरू किया, invest में किया था called Wedding Style, and I was with them for many years. And they're still there. Wedding Style is still there, and my business partners are very good. They have a lovely team. Apart from that, being spiritual, हम बाबा को मानने के लिए हमारे घर में भक्तिदार बहुत था. भक्ति था, मतलब हमेशा आरती भजन, ये तो बचपन से था मेरे. दैट वाज फॉर मेनी इयर्स. उसके बाद फादर के डेथ के बाद आई स्टार्टेड बिकॉज आई न्यू पीपल इन बॉलीवुड. मुझे पता था कि ये लोग कौन थे. तो आई वाज द एजेंट ऑफ लंदन. तो मतलब जब एक्ट्रेसेस आते थे यहाँ, बिग एक्टर्स, फिल्म स्टार्स, सिंगर्स, आई शुड प्रमोट दिस शोज अ लॉट. मतलब मैंने उसको काम दिलवाया फॉर मैगजीन कवर्स, फॉर दिस दैट, एंडोर्समेंट्स, फॉर एडवर्टाइजमेंट्स. तो मैंने बहुत काम दिया है टू अ लॉट ऑफ बिग सेलिब्रिटीज इन इंडिया. सो आई वाज द गो टू पर्सन फॉर देम इन लंदन कि राजीव यहाँ है, वो हेल्प करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. एंड ऑब्वियसली बाबा's birthdays they were celebrate every year, तो every year to call a singer also. तो my foot was always in Bollywood, but मुझे कोई शौक नहीं था टीवी पे आने के लिए. I was always there somewhere. I was always behind the camera doing something, but मुझे शौक नहीं था कि स्टार बनने के लिए. वो तो हो गया. आपने इतनी अच्छी तरीके से विद इन लाइक फ्यू सेकंड्स पूरा आपने समराइज कर दिया. पर मुझे थोड़ा पीछे जाके उसमें थोड़ा जानना है कि देखिए आप बच्चे थे, 11 साल के थे शायद, when your dad was sick. He came from Africa once and he had अचानक he was feeling very sick, wasn't feeling very well, and we found out उसके पास he had TB in the brainstem, which पूरा nervous system को affect कर दिया था. तो someone who's traveling the world, being a businessman, इतना बड़ा businessman, उसको अचानक व्हीलचेयर में आ गया, तो ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए. He was very upset about the fact that he was ill. It's a very big thing. एक 11 साल के बच्चे के लिए किसी भी कंट्री में 11 साल का लड़का 11 साल का लड़का ही होता है. अपने पिताजी को जिसको इतना देखा है, यू ट्रैवलिंग वर्ल्ड, यू सेड इतना कुछ कर रहा है, आपको क्या महसूस हुआ? मुझे इतना वो टाइम मुझे लगा कि हाँ ठीक हो जाएगा, everyone goes through things, ठीक हो जाएगा. I remember he was in the hospital for 10 months, वो 10 महीने हॉस्पिटल में थे. एंड मैं हर रोज जाता था. I remember my siblings were at school, वो लोग एग्जाम्स कर रहे थे, मम्मी काम पे जाती थी. शी used to go to work at 9 in the morning and come back at 5. थोड़ा बना के खाना, 6 बजे हॉस्पिटल जाती थी, वो 11 बजे वापस आती थी वो. And again same routine for 10 months. So in the hospital पास में नहीं था, वो सिटी में था. It was a neurology hospital. So it was very tough for us at that time because I think वो टाइम को पता चलता है कि फैमिली में कौन है, कौन आपको ख्याल रखता है, कौन आपका सच्चे दोस्त है, कौन सच्चे दोस्त नहीं है. And that time I think I saw my mom, बहुत उसके ऊपर प्रेशर था, बहुत उसने बहुत टफ लाइफ गुजारा वो टाइम पे. So I think that was the most thing I remember the most of that time. I always had hope कि मेरा फादर ठीक हो जाएगा. I always thought that चलो एक दिन होगा वो ठीक हो जाएगा, but obviously वो नहीं हुआ. But he lived 5 years after that. But बहुत in a way on his passing I was extremely sad कि वो he passed away. But in a way I felt relief for him that वो छूट गया इससे, because he was never happy. जब वो व्हीलचेयर में आया था तो हमेशा वो एक आंसू था, वो एक दर्द था उसके अंदर कि मैं कुछ कर नहीं पाता. I can't. He lost his speech. He couldn't write properly. चलने तो कोई बहुत वो था. And he was very sad. I remember the day he passed away, Janmashtami tha, and he went to the Hare Krishna Mandir, and I was shooting in Dubai, and I wasn't even in the country, and my mother was there, and she said that वो Krishna के साथ सामने रोया, either take me or make me better. I don't want to be like this anymore. And he came out of the mandir and died on Janmashtami. So he had prasad in his mouth, and I was in Dubai. I remember very clearly मुझे phone आया कि rush to London, your dad's not feeling well. किसी मुझे बताया नहीं डेथ था, but जब मेरी माँ फोन पे आई और वो चिल्लाने लगी, तब मुझे पता चला यहाँ कुछ गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है. Now I was getting a flight, remember, मैं flight ले रहा था from Dubai, and I was getting on the flight, and I called my cousin who's a doctor, and I called, I said, my dad's really sick, please go and just see if he's okay. And he goes, your dad was such a nice man. जब was बोला था, I said, भाई यहाँ से कुछ गलत हुआ. So I was on the flight. I remember my economy में था वो time, but I was hyperventilating. The captain said, what's wrong? And they took me to first class. And I was sitting there, and when his ground staff को call किया कि is his father alive or not, they must have said to them, his father's passed. But they didn't tell me then even, until I got to London. So it was very, imagine 18 साल का बच्चा, all by himself. 18 साल का था, I was very young. And I'd come there. So I've seen बचपन से, मतलब 11 years के बाद 18 तक मैंने बहुत दर्द महसूस किया है, बहुत देखा मैंने. I think that's what grounded me and made me a better person, made me a stronger person to deal to deal with what would come ahead, I suppose. अपने siblings के बारे में बताया, कौन है? मेरी बहन है, मेरे भाई है, दोनों बड़े हैं मेरे से. बड़े, आप छोटे हैं घर पे? मैं सबसे छोटा हूँ, लाडला हूँ सबका. So you might have got all the attention that the not younger at one all. gets. I wish I got Along with attention. bullying, little bit of I bullying. think that I was the one who had to step up to mark because my sister was studying. She was becoming a lawyer. My brother's exams were also there. He was becoming a pharmacist. I was the youngest that I could help my mom a lot. मैं उसके साथ
बात कर सकता था, गुड हेल्प। इतना टाइम 18 के बाद आई वाज जस्ट डूइंग माय यूनिवर्सिटी, तो मैं शुरू कर रहा था, तो इतना एग्जाम्स भी नहीं था मेरा, तो आई थिंक आई बिकेम द हेड ऑफ द हाउस एट दैट टाइम। मैं पूरा कंट्रोल मैंने ले लिया था, बिकॉज अच्छा ये हुआ, अब क्या करें, वी कांट सिट एंड क्राई ऑल डे लॉन्ग, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। सो आई वाज विद माय मम, आई वांटेड टू कीप एक्टिव मेंटली, दैट यू नो कीप अ गुड वर्क, घर पे जाओ, यू नो आई सेड, यू नो एक स्टिग्मा होता है हमारा कम्युनिटी में कि मतलब जब कोई हस्बैंड डेथ होते तो व्हाइट साड़ी पहनो, व्हाइट पहनो, ये नहीं पहनो, वो मत पहनो। एंड आई टोल्ड हर, यू विल वेयर रेड, यू विल वेयर ग्रीन, यू विल एवरीथिंग, अब सब कलर्स पहनना, सब कुछ पहनना, जस्ट एक्ट एज इफ यू स्टिल अलाइव। एंड आज तक वही करती है वो। आई सेड दुनिया को जो बोलने दो, अब मेरी माँ हो, यू बी द सेम। अभी 11 ईयर्स के बाद, अब 18 साल में ही आप यू वेर शूटिंग, यू डूइंग मॉडलिंग, राइट? ये जर्नी कैसा था आपका, कहाँ से शुरू हुआ? 11 साल का नहीं था, मैं 17 साल था जब शुरू हुआ था। नहीं नहीं नहीं, आपने I mean, you've seen everything Yeah, from I've 11 years, and you sort of chose a career path which has not got a lot of success rate. Let's be honest. जितने But that time था. See, Okay, now it's not. okay. Now competition बहुत ज़्यादा था. I'm talking 2001 or 2002 and 3 was very, for Indian man to come out and वो टाइम एक मॉडल बनने के लिए वो बहुत बड़ी बात थी. And इतने लोग नहीं थे मेरे जैसे वहाँ टाइम पे, because obviously I had green eyes, I didn't look Indian. I could mold into an Italian or you know a Persian person very quickly. तो वो रिजेक्शन टाइम कैसे हैंडल किया आपने? वो टाइम पे हम श्योर कुछ तो रिजेक्शंस हुए बहुत सारे आए हैं, बट मुझे हैंडल किया? to be honest with you, जो काम मुझे मिलते थे that time मैंने रिजेक्शन फिक्स ही नहीं किया था, because I was getting work सामने से, मैं ढूंढ नहीं जाता, सामने से आ रहे थे, so it was not like I had to go to auditions or something, so that part I was very lucky. हाँ, रिजेक्शन बाद में फेस किया था जब मैं अभी 6-7 साल में जो कंपटीशन होता है, but उसके बाद God is very kind to me, Chandu, very kind to me, like that respect, rejection also I feel not in that particular thing, but other parts of my life rejection मैंने बहुत देखा है, बहुत ज्यादा। फैमिली का सपोर्ट कैसे था, स्पेशली फ्रॉम मम? Mom was the anchor. She still is the anchor of my house. मतलब मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, obviously she's the rock of my house. मतलब मेरे पत्थर है, पिलर है हमारे घर का, तो वो हिल जाती तो हम सब हिल जाते हैं, ऐसे होता है। तो I mean her support, my brother and sister support, the four of us became very close पापा के जाने के बाद। बट यार दो टफ टाइम्स दिखाते कौन आपके साथ है और नहीं है, तो तब मुझे हमको समझ आया कि मतलब हाँ ये फेक हुआ है, ये फेक हुआ नहीं है। तो ठीक है, अभी आप ये लंदन का लड़का जो मॉडल है, जिसको बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से कोई भी ताल्लुक नहीं है, यू डोंट हैव एनी कनेक्शंस, कैसे हो गया ये, कैसे चालू हुआ कि आप यहाँ से उठ के सीधे वहाँ गए हैं, एंड अपॉन इन्विटेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग? So you know what? When I was modeling in India, आप जानते लोगों सब जानते हो, मतलब एक्टर्स से, वो सिंगर्स से, और जब बाबा के बर्थडे मैंने शुरू किया था, बहुत सिंगर्स को मैं जाने लगा, और उसको बुला रहा था मैं। सॉरी, इवेंट्स इवेंट्स मैंने शुरू कर दिया था, ये कर दिया था, कॉलिंग एक्ट्रेसेस डाउन। सो आई ऑब्वियसली थ्रू मॉडलिंग मैंने काफ़ी लोग को मिला, बट आई डिडंट, टीवी में कभी प्लान नहीं था आने के लिए। तो व्हेन आई वाज डूइंग मॉडलिंग मैंने काफ़ी, आई केप्ट माय नेटवर्किंग, आई केप्ट माय कनेक्शंस गोइंग। एंड जब मुझे पता चला कि कोई एक्ट्रेस आए हैं लंदन में जो मैं जानता हूँ पर्सनली, तो उसको फोन करता था कि देखो आप आए हो, यू वांट सम वर्क, ये मैगजीन डील है, ये पानी का डील है, ये डील है, एडवर्टाइजमेंट करना है। एंड पीपल इन दिस कंट्री वांटेड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस टू बी इन द कंट्री टू डू द एड्स, बिकॉज उसको फ्लाइट टिकट नहीं देना था, वीजा नहीं देना था, तो जो लोग यहाँ ऑलरेडी है उसके साथ काम करो। तो मैं आई वाज द गो टू एजेंट हियर। देन सबको पता चल गया कि राजीव सबको जानते बॉलीवुड में, तो जो चैनल्स, कलर्स चैनल हो, स्टार प्लस हो, सोनी टीवी हो, ये हो वो हो, अ लॉट ऑफ पीपल जो लोग दे आस्क्ड मी टू हेल्प, खास मी, तो मतलब हमको ये बंदा चाहिए, कैन यू टॉक टू देम, वो मान नहीं रहा, बात करो, आप उसको दोस्त हो। तो दैट्स हाउ यू गेट इनटू वोट कास्टिंग इन इंडिया। अब क्या हुआ 2021 में बिगिनिंग में बिग बॉस 15 आया था, एंड आई हैड हेल्प कास्ट फॉर दैट। तो मैंने काफी लोगों को अंदर, आई मीन आई हैड पुट सम पीपल इन द हाउस एट दैट टाइम, एंड इन अबाउट फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मुझे एक फोन आया था कि राजीव, द शो इज नॉट डूइंग वेरी वेल, टीआरपीज बहुत गिर रहे हैं, वी वांट यू इन द हाउस। आई सेड फॉर व्हाट रीजन? दे सेड नो आप बहुत फनी हो, यू आर वेरी वेरी फनी, आप आ जाओ घर पे, बिकॉज वी वांट टू हैव अ गुड कंटेस्टेंट हाउस, टीआरपीज और बढ़ जाए। ऐसे मैं करना मोर, मुझे कोई जानते भी नहीं है, like I'm not even famous. I said, this is a celebrity version. It's not like every आ रहा है। I said, what will I do? I said, I'll be out in 2 weeks. They're going to, you come, हम संभाल। I said, संभाल क्या संभालोगे आप? It's the fans are voting, so where will I stay? They're going to come for a week, no problem. So then they gave me 5 hours to think about it. Mom was at a wedding में, मम को फोन करता हूँ मैं जाओ कि ना जाओ, you know, she's like, I said, मैं अभी public property सब मुझे जानने लगे मैं कौन हूँ, you know, I don't want to be that public. And that in the heights of COVID. तो I was like, visa भी नहीं मेरे पास जाने के लिए, मतलब कैसे जाऊँ? Then I called a minister in Delhi that I knew. I said, look, I need some help with my visa. Can you help it? And 24 घंटे अंदर मेरा वीजा हो गया, वर्क वीजा at that time, because you couldn't go, you had to go to work visa to India that time in COVID. तो मेरा वीजा हो गया, everything was just falling into place the way it's supposed to fall into place. तो मैं बाहर गया, I took one bag with me, and I thought चलो एक हफ्ते में बाहर निकल जाऊंगा मैं। I stayed in the house 3.5 months. जो भी आपको जानता है थ्रू टीवी, वो तो जानता है कि आप पॉजिटिव तो हो ही वहाँ पर भी, और बहुत एंटरटेनिंग हो ऐसे लगता, पर आप पर्सनल लाइफ पे बहुत इंटेंस हो, पर्सनल लाइफ पे बहुत इमोशंस हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको, यू ऑलवेज हैव अ पर्पस व्हेन यू टॉक, एवरीथिंग इज
is said in a certain context, everything is fine. तो ये स्विच हुआ, आपको ट्रेनिंग करना पड़ा कि यार मुझे इसे पोर्ट्रे करना है स्क्रीन पे, क्योंकि अलग Not से at दिखते हैं, all. आपको भी पता है, आप भी देखे होंगे ना, यू कम अक्रॉस लाइक बिग बॉस ऐसे शो है, जितना आप ढंका हो, जितना यू टू शो दिस इमेज ऑफ योर्स ना कि मतलब प्रिटेंड करो, नहीं चल सकते. एक दिन चलेगा, 2 दिन मैक्सिमम, उसके बाद तो इट्स ओपन बुक. यू कांट हाइड बिकॉज यू आर देयर ऑल द टाइम. इट्स लाइक यू लिविंग द हाउस, 24 घंटे सामने हो कैमरे से, कितना आप छुपाओगे. तो आई वाज लाइक आई वुड बी मी. ओ पसंद आए नहीं आए को मुझे घंटा फर्क पड़ता है. लेट्स होप द ऑडियंस जेल्स विद मी. आई एम किड यू नॉट. TRPs ऊपर गया जब मैं अंदर गया था, and the audience was gelling with me. The audience was loving me. In fact, they evicted me, I think, the 19th of December after 3.5 months. And then when I left, the TRPs dropped. And they called me back in the show 10 days later because to bring us back up again. So मतलब I was the only contestant in history जो इतना early wild card था और जो इतना late वापस गए नहीं the end of the show. So it was very very intense. And then after that I came out of the house. I'm like, do people really like me? जब मैं बाहर आया तो मतलब लोग पागल, मतलब I couldn't leave my hotel. I couldn't go to the security. But it was really intense. कैसा था आपके लिए? देखो, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए सब इट्स एन ओपन बुक, कि वहाँ पे लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं, हाईली पर्पसफुल होते हैं, टू इट्स लार्ज एक्सटेंट अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं, जिसके बस जो करना है करना है. आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड, सेल्फिश होते हैं बहुत. बहुत सारे हैं, बहुत सेल्फिश है. आप कैसे, आई मीन आप यहाँ से जाके वहाँ गए हैं, डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट एनवायरनमेंट, और मोर देन एनीथिंग एल्स डीलिंग विद पीपल. आई मीन आपको पता होगा, हम तो देखते रहते हैं बाहर. ऐसे कैसे हो गया कि you were like you know slipped into it smoothly and still surviving there? कैसा है माहौल वहाँ? See, when I go to Bombay, especially with the mindset वहाँ लोग, you're right, बहुत selfish है, बहुत opportunities भी है और बहुत कुछ करते हैं काम लेने के लिए. मैं I am not from that world. मैं बहुत spiritual इंसान हूँ. मुझे घंटा फर्क पड़ता है कि मतलब I can't suck up to people. मैं चाट नहीं सकता किसी को. काम देना तो दो, प्यार से दो. And if I have to work hard, I'll work hard at my work. पर मैं वहाँ जाके नेटवर्किंग पार्टी में जाऊँ, काम दिलाऊँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ. आई एम लाइक, जो मेरे लिखा है वही मुझे मिलने वाला है. एंड इट कम्स नेचुरली. दैट्स वन थिंग इन द होल ऑफ बॉलीवुड नोस अबाउट मी. एंड आई एम वेरी आउटस्पोकन. जब गलत होते हैं तो मैं बोलता हूँ गलत हो रहा है, शायद वो आपको अच्छा लगे या ना लगे. एंड दे नो दैट आई हैव अ फनी साइड बट अ वेरी स्ट्रिक्ट साइड आल्सो. सो व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे एंड आई वाज इन बिग बॉस फॉर एग्जांपल, इवन टॉकिंग टू द कैमरास, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू आस्क स्टफ फ्रॉम बिग बॉस, like मुझे ये चाहिए बाहर से, ये चाहिए, you know, my gala was hurting, तो मुझे पिल चाहिए. used to go to the camera and ask them, can you just send it in the house for us? They would listen to me more than anybody in the house. मैं प्यार के साथ बात कर रहा था. See, problem in India is not in India. When you have a certain status or your acting power or you have something where you think आप बहुत बड़े हो दिमाग से, तो आपका बोलने का स्टाइल भी चेंज होता है. Not realizing कि सामने लोग भी इंसान है, सामने लोग भी काम कर रहे हैं. ये लोग कोई मुफ्त में नहीं आया, ये इसका काम है. So, you know, that respect factor, I keep with my staff a lot. Even my makeup artist ho, my spot boy ho, my manager ho, my PR ho, I have a very big team in India that handle me. Even when I'm here, they still handle me. And I'm very respectful to all of them because they work. That's their job. I'm paying them for that reason, right? Yeah, sorry, but ये तो आप है, आप चेंज नहीं हुए हैं, पर आगे वाला इंसान, आप कल्चर शॉक तो हुआ ही होगा. I mean, see, there's one way that, you know, you're honest, you're outspoken, जो भी है black and white सीधा है, पर आगे वाला इंसान तो मैनिपुलेटिव होगा. आई मीन हमको तो इतने सारे पता होगा. तो कोई कल्चर शॉक हुआ आपको? को क्या डिफरेंस लगा? आई मीन गुड और बैड, जो भी आप शेयर कर सकें. मैं बहुत बैड देखा है. आई थिंक द बेस्ट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन, जो मैं करता हूँ, जो मैं उठता बैठता हूँ ना, मैं वही लोग के साथ करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं. आई नो हु द बैड वंस आर. आई नो कहाँ गलत लोग हैं, कहाँ नहीं बैठना है, क्या कहाँ नहीं उठना है. आई नो कि यहाँ जाऊँगा तो ये ऐसी, इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू गो, तो आई डोंट गो, आई अवॉइड इट. आई कीप माई सर्कल पॉजिटिव. आई spend time with those people जो spiritual हो, जो अच्छे हो, are good positive people, and I stay away from those who are not. So, see, जब लोग ज़मीन से, मतलब एक गांव से आए बहुत कोशिश करने के बाद फेम मिलता है, तो दिमाग हवा लगती है और घमंड चढ़ता है. That's just how it is. But it's how, see, that's only for very, I always believe, जितना आप humble रहोगे, इतना आपको काम मिलेगा. People who have got घमंड and people who have got the ego after 1 or 2 becoming famous, see, Big Boss is very bad like this. Big Boss को लगता है कि आप बाहर आके शाहरुख खान लगता है, आपको शाहरुख खान बन गया है. It's a very short-lived fame. 6 months होते हैं ये fame until the next season comes. तो इट्स वेरी डिपेंडेंट कि आप 6 महीने में क्या करते हो. आई गॉट फेयर फैक्टर खतरनाक खिलाड़ी, आई गॉट आफ्टर दैट, आई डिड हाउसफुल आफ्टर दैट, आई डिड लाइव इवेंट्स आफ्टर दैट, आई डिड सेलिब्रिटी मास्टर आफ्टर दैट. मैंने 7-8 शो किया उसके बाद, फिर मैंने लाइव इवेंट्स शूट कर दिया था. और मैं वहाँ रहता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ. तो जब मेरा शो खत्म होता है, मैं 1-2 महीने रहता, फिर वापस यहाँ आता हूँ, तो बैक टू माई नॉर्मल राजीव. तो मैं इतना घुसता भी नहीं हूँ इंडस्ट्री में कि मतलब मुझे हवा लगे. आई हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स मेड मी अंडरस्टैंड दिस कल्चर शॉक, बिकॉज इट्स नॉट अ कल्चर शॉक फॉर मी. आई एक्सेप्ट एवरीवन हाउ दे आर. मतलब आई डोंट जज देम व्हाट दे आर, दे हैव लाइक दैट, बट इट्स अप टू मी कि बैठना उसके साथ कि नहीं बैठना. तो आई अवॉइड सिटिंग विद दिस काइंड ऑफ पीपल. अभी देखो, आपने तो एक टेम्पलेट सेट कर दिया. हाँ. कि भाई
ऑनेस्ट लोग जो भी सीधे हैं वो लोग भी एंटरटेनमेंट मोड पे जा सकते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए परसेप्शन। 100%. तो आपने अच्छा टेम्पलेट सेट किया, बहुत अच्छी बात है। पर अगर कोई आ रहा है और उसको अवेयर रहना है, क्योंकि हर एक तो हैंडल नहीं कर पाएगा, एंड वी हैव सो मेनी केसेस, तो आप सजेस्ट करेंगे जो डार्क साइड के बारे में 2-3 एग्जांपल दे के जिसको जो लोग को अवेयर रहना चाहिए कि भाई ये है जो यू नीड टू बी अवेयर, बिकॉज इट्स लाइक यू नो इट विल सक यू इनटू इट एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग you will be into it and you won't be able to get out of it. See, Bollywood is like a pack of cards. If you're dealt the right hand, it's in your favor. If you do the wrong hand, it could be destructible for you. I always say, come to Mumbai. If you want to work in Bollywood, come with a backing, a degree, काम जो भी है. Don't come के मतलब सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए, because you'll not succeed. यहाँ लाखों लोग बैठे to become a star. मतलब it is beyond your imagination. कितने लोग actors हैं. बॉम्बे में ज़्यादा गाड़ी है than people imagine. इतने वो ज़माना हो गया बॉम्बे में कि मतलब there's no place to walk in Mumbai. Everybody was becoming actor. People want, see, the difference in Bombay is this. People want fame. They don't want to act. People want the stardom. They want the money that comes along with stardom. I'm telling you, I come on TV. I get paid more money being on TV than a film actor does. Would you believe it if I say that? Because मेरा regular income होता है. TV star में, unless you're a big star, you don't get paid a lot of money. I know so many actors, 3, 4, 5 फिल्म किया है, अभी कुछ काम नहीं है लोगों के पास, एंड वो लगता है कि टीवी में आने के लिए उसका स्टेप डाउन है, तो अब लोग वो लोग फंस गए इस बीच में. एंड रिजेक्शन बॉम्बे इज द बिगेस्ट. यू गेट सो रिजेक्टेड, मतलब ऑडिशन करने के बाद यू माइट गेट वन अपॉर्चुनिटी, बट बॉम्बे इज नॉट फॉर द लाइट हार्टेड. एंड आई ऑलवेज बिलीव कोई शर्म नहीं है वापस कुछ काम करने के लिए. कम ट्राई फॉर 1 or 2 years. इफ इट्स नॉट वर्किंग, लीव. इट्स फाइन. इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, आपको इच्छा करने के लिए, पर पूरा जिंदगी मत बैठो वहाँ, बिकॉज बॉलीवुड ऐसे है कि एक दिन आप हो, एक दिन आप ना हो. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई हैव कम टू द टर्म्स ऑफ फैक्ट, वेरी सी गॉड्स बीन ऑन माय साइड, बाबा's been on my side, where मैंने नाम मेरा बना लिया है. You know, I've done enough shows कि if I go outside, if I go to India, I get that respect factor. They understand Rajiv Azad का आया है. Whether I get work or not, it's up to me. But I've made very good relations with my production companies also. तो यहाँ बैठ के भी मुझे फ़ोन आते काम के लिए. You know, I try not to reject what I can. If I don't like a concept, मुझे लगता है कि ये मेरा लिए नहीं है, वो मेरा कैट के साथ चल रही, तो मैं मना करता हूँ. But for the people who are coming from गाँव and city like this, want to come and work in Bombay, come with a backing. Because it's literally a pack of cards. आपको एस मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मतलब you get low cards. So it's really a gamble. Bollywood is a gamble. कितना thick skin होना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा. See, casting couches everywhere. Casting couches even in Bombay. I'm not gonna lie. People say it exists a lot. आपको कोई पूछा? 100%. 100 पूछा मुझे, पर मुझे लोग मेरे साथ कोई पंगा लेता नहीं कि वैसे तुरंत जवाब देते हैं. Because see, I'm from London. I'm not struggling to come here. मैं स्ट्रगल नहीं हूँ कि मतलब मुझे ये काम चाहिए और मेरी ज़िंदगी नहीं बन जाएगा. A lot of people come to Bombay with that quite. They come from a very poor background. And I feel very sorry for them because they think this is their be-all and end-all. So they do certain things to become stars. You know, I've had many. See, they know with me they won't get anywhere. तो किया है, मैंने तुरंत shut down किया है काम दिन दिन. And I've not really gone to these places or meetings. वो लोग सामने से आए हैं without me even going to them. So I'm saying it's been very different with me. They target people. They target the vulnerable. Vulnerable. The vulnerable people. अच्छा आपको काम करना, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. It's a very how can I say to you? It's not just Bombay. It's happening in Hollywood. वो तो हम सबको पता है कि हर जगह पे है. हर But industry this में. being in a limelight all the time, you have a face, you're good looking people, और मीडिया पे ज़्यादा चलता है, तो ये उछल के कुछ ज़्यादा ही आता है, which is fine. But ये लोग आपको vulnerable देख के आपके पास आते हैं, आप मना करते हैं, तो उसका तो रिप्रिकेशन होता ही होगा, क्योंकि वो जाके obviously he'll try to take grudge or whatever because he didn't get what he wants. They don't give you the work. See, they don't give you the work. See, if you're a star, if you're already established, then no, that doesn't happen because it's obviously up to the production company, people who hire you. But the new people के साथ बहुत होता है, and I feel bad. ये लोग जो अप्रोच किया आपको ये कास्टिंग काउच के लिए, ये तो अभी तो कॉमन सब्जेक्ट हो गया, पर ये लोग बिग शॉट्स होते हैं या नहीं, वो लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, नो बिग शॉट्स. ये लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो लोग बोलते हैं आप चाहिए. सी नाउ नोबडी वुड डेयर. इवन शुरू में लोग डर रहा था मेरे पास आने के, लंदन से आए तो आई एम ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन, आई एम एजुकेटेड पर्सन. आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल फ्रॉम द गांव आर नॉट एजुकेटेड, बट द सर्वाइवल मोड इज दैट. Today I can go home and live a very nice life in London, which I am, but I'm saying for them, they come from a very poor background. They have to succeed to put food on the table back home. उसको पैसा देना है, वापस देना है. उसको लगता है शायद ये मिलेगा, मैं स्टार बन जाऊँगा, ये होगा, वाला पैसा आएगा. People do succumb to this. That's why अभी तक चलता है ना, लोग कर रहे हैं, इसलिए तो चल रहा है ये बात.
अब लोग सबने मना कर दिया तो क्या, ये तो खत्म बात होती. I think it will be there as long as the humankind is But existing. it's not because- just in Bollywood, in every industry. तो बिग बॉस के बारे में बताओ. आप गए घर में, लॉक हो गए इतने दिन के लिए, और हर एक कैरेक्टर मिला होगा. Well, I think Big Boss, out of all my shows, Big Boss was the nicest show I did. It's very sad. It's very, I mean, it's not sad, shocking to hear that, because I had very good characters in my house. I love Raki Sawant. She was in the house with me. मुझे बहुत पसंद. Raki बहुत दिल की बहुत अच्छी है, तो I loved her. I had Tejasvi, I had Shamita, I had different characters in my house. Karan Kundra was there, Jay Bonashali. ये आप सांप का किस्सा बताओ मुझे. आप क्या हुआ वहाँ, सांप आ गया वो हाउस में? ओ सांप, ओ गॉड. विशाल कोट्यान एक कंटेस्टेंट था जो हमेशा भोलेनाथ भोला, ही ऑलवेज अ शिव भक्त. सो ही गॉट एविक्टेड एंड ही यूज्ड टू स्लीप नेक्स्ट टू माय बेड. तो मैंने टावल उठाया और बंद एक लंबा सा सांप निकला, ब्लैक एंड व्हाइट का निकला. एंड ऑब्वियसली फिल्म सिटीज एंड इन अ जंगल ओनली. So how I got in the house, nobody knows. It must have been they were sleeping because they can't just come in the towel like that, right? So I said, I am not entering that bedroom till this whole place is like vacuumed. So we were shocked, like, yeah, saap ke saath. But we saw a lot of monkeys and chuas everywhere, and we were told many times, look, this is going to happen. You might find some animal, let us know. Well, someone who hasn't actually experienced that sort of environment, क्योंकि आप तो यहाँ से गए हैं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है आपके लिए. But उसके बाद मैं किसी खिलाड़ी में गया था जो असली वो सांप तो मेरे को चढ़ गया. वही I just want to take you through there also, but ये कैसे हैंडल किया फिर? ये चूहे आ रहे हैं, मैं तो वहाँ पे बिच्छू तो आ I रहे ran हैं. outside. I could not handle it. That time I could handle it. लंदन में तो देखते नहीं सांप कभी हम. Yeah. तो देखा तुम्हें बहुत डर गया था, मैं वापस आ गया बाहर. I was like, I am not going in this room until you clean this room. I told the cameras, you will not see me inside. They came 3-4 घंटे सब कुछ चेक किए कि नहीं, तब मैं गया अंदर. दोस्त बने? बहुत सारे दोस्त. I'm still in touch with many people. Like Shamita I'm in touch with, Nishant, Pratika I'm in touch with Neha, Rashmi. I'm in touch with Raki, Karan Kundra and Teju, obviously I'm in touch with a lot. Who else is my Jay? I'm in touch. Jay I'm a little bit in touch with. इतने सारे लोग मेरे. Simba I'm in touch. In fact I'm in touch with everybody in my season. With me and the only contestant except Vishal Kotia I'm not really in touch with, but 90% of people in that show I'm in touch with. ये साफ सफाई कैसे होता है बिग बॉस में? कोई हम खुद नौकर करते आके नहीं, हम खुद करते सब कुछ. I have not seen a single show for 3.5 months. ये देखो आपके यहाँ अभी बिग बॉस में, एज आई सेड, तरह तरह के लोग आते हैं. आई मीन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि उठा के ये लोग डाल देते हैं, ऑब्वियसली फॉर द TRPs एक्सेट्रा. वो कैरेक्टर्स बन जाते हैं, वो जिसको यूज़ करना भी नहीं आता, टॉयलेट्स, राइट? तो ये आप कैसे हैंडल करें? बिकॉज यू ऑब्वियसली हैव अ सर्टेन वे. I'm not going to mention the contestant, but we had a contestant that was actually using the toilet very badly, using the shower as a toilet. और she It was very bad. And we just scream at this contestant, क्या कर रहे हो? You know, he was on his own trip. But generally, सब लोग साफ थे. I mean, I used to be in charge of cooking because I was the only one cook in the house. ये लोग इंडिया से, मैं लंदन से हूँ, सब लोगों का खाना मैं बना रहा था हर रोज. आप कुकिंग कर रहे हैं? 25 लोगों में हर रोज कुकिंग करता था. I used to make आटा for like 10 kilos of आटा. I used to make a day. सब्जी, आटा, दाल, बाल, जो भी. I was a main cook. So my job was cooking in the house. सबका, I think Karan was cleaning the toilets and doing showers, and Tej was the same, and then Umar was doing the bedrooms inside, and I think Barlow, everyone had their own duties in the house, but this was my duty, cooking. इतने दिन एक घर में है तो दो चीज़ मेरे हिसाब से बनते हैं कि यार लोग पसंद आ जाते हैं 100%, या कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं. नॉर्मल है, 25 दिन है तो हो भी सकता है. कुछ और भी बन सकता है कि किसी से प्यार हो जाए. तेजो का करण का हुआ ना प्यार? आपका किसी के साथ हुआ? बिल्कुल भी नहीं. ऐसे क्या कौन किससे प्यार करूँ घर में? तेजस्वी करण वाज सो, इनफैक्ट दे माय वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड मेरे सामने उसका लव स्टोरी शुरू हुई थी. नाउ आई यूज्ड टू स्क्रीम एट देम ऑल द टाइम कि भाई मेरे सामने तुम क्यों कर रहे हो? दिस only me, it was me by myself and them. कर रहे हो मतलब क्या? मतलब they used to be like, oh हम शादी करेंगे तो बच्चे का नाम ये होगा. ऐसे भाई तुम लोग पागल हो क्या? मतलब, and I used to laugh because मेरे सामने करते थे, किसी और के सामने नहीं करते थे वो. And we used to be sleeping at night time. Big Boss used to say, oh फुसफुसा के बात मत करो, क्यों इतना शांत से बोल रहे हो? तो used to wake the whole house up. I used to scream, I said, what is your problem? I said, let us sleep. But they're still together. I mean, imagine 5-4 years, they're still together. Raki Sawant आई थी उसके पति के साथ, वो टूट गया बाद में, but that was very funny also. But you know, I just went for fun. I think, you know, I was relaxing in the house. I find it time pass. It was good. ये क्लीशे हो गया है ना, कि क्वेश्चन भी मेरा क्लीशे हो गया है, और जो बन रहा है बिग बॉस में वो भी क्लीशे हो गया है कि कुछ ना कुछ लव मेकिंग के थोड़े सीन्स बता देते हैं. ये होता है या स्क्रिप्टेड होता है ये सब? कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है. आई विश इट वाज स्क्रिप्टेड कि हमको पता चला क्या करें. नथिंग इज स्क्रिप्टेड इन द हाउस. एंड लड़ाई तो 1 घंटे के लिए होती है दिन पे. वो दिखाते एक एपिसोड में पूरा एक घंटे के लिए. इन द हाउस हार्डली यूज्ड टू फाइट, मे बी वंस इन अ डे, इफ दैट.
अब इतनी गंदी लड़ाई नहीं होती थी like they used to show on TV. होमसिक फील हुआ जब वहाँ पे थे? Yeah. I used to miss my mom a lot. I never even miss my phone. Phone का कुछ बिल्कुल याद नहीं आया. But mom को बहुत मिस किया मैंने. But I forgot what an iPhone felt like in my hand. जब मेरा iPhone 12 से भैया iPhone अच्छा किस ऑन करे. I forgot my pen. I forgot how to feel in my hand. But that was the best detox, not having the phone. मुझे बात बहुत हुई अच्छा मामा से? तुरंत बात हुई थी. तो 25 दिन में बात ही नहीं हुई? 25 दिन क्या 3.5 महीने. सो इट्स 3.5 महीने, आई एम सॉरी. तो कुछ बात आउटसाइड वर्ल्ड से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड? Disconnected. Completely no. Completely away from everybody. They had corona. कोरोना के बाद एक और वायरस आया था. उसका वेरिएंट आया था ना? वेरिएंट आया था. वो ये भी नहीं पता ये वेरिएंट आया है. अच्छा. तो जब मैं 12 मास से ये क्या हो गया दूसरा वेरिएंट है क्या दूसरा वेरिएंट आ गया तो वी नॉट एबल दैट आल्सो. अच्छा, अभी कैसे लगता है व्हेन यू लुक बैक ऑन द बिग बॉस हाउस? आपको मजा फील होता है या बिग बॉस में? मुझे बहुत मजा आया बिग बॉस में. वो घर एक अलग चीज है. सी मेरे सीजन के बाद 16 ठीक था. 16 के बाद बिगड़ गया. I didn't watch any season after 16 because I thought it was very boring. And they made it into a very different kind of a house. The celebrities that used to be there. So I didn't like it after 16, but my season was very good. I like my season. ये हो गया बिग बॉस. I loved एक घर में पिंजरे में बंद complete अभी बंद. पिंजरे के बाहर जानवरों के साथ. I swear. ये क्या ये अभी वाइड स्पेक्ट्रम आपके लाइफ में तो हर एक जगह चल रहा है. एक पोल फ्रॉम वन एंड ऑफ द पोल टू अनदर. I love Big Boss. ये बिग बॉस के बाद मैं खतरों के खिलाड़ी पे आ रहा हूँ. ये वही बोल रहा हूँ, पिंजरे के अंदर से पिंजरे के बाहर आके came out of Big Boss. जानवरों के बीच. 19th I came out at night. No, so 18th I came out at night time. 19th I got a call from Khalis in the morning. I was the first contestant to be signed for Khatro Ke Khiladi. And they were starting casting in March or April. But December 19th को मुझे confirm किया था. अब तो मैंने तो मतलब अब भी बात है we want you in the show. You're the first contestant we're looking. Basically बात भी नहीं आई. बस आपको आना है शो में. Basically बात बहुत बाद में आई. But they wanted me to sign that I was coming to the show. I said, why? Come on, no. Before you sign anything else, you want to sign the show. So I signed Khatro straight away. And even in Khatro Ke Khiladi, when I went to Khatro, that I thought मैं नहीं कर पाऊंगा because it was very stunt wise and I had a thyroid issue. I was putting on weight with my thyroid and it was very tough. And then when I went to the show, Rohit Shetty goes to me, are you up for the show? I said, yeah, I'm doing it. Now I'm doing it. At that time, we had Tushar Khalia, we had Faizu, we had Jannat, we had all these like Shriti Jha, Shivangi Joshi, big names were there. I said, मैं कैसे कर पाऊंगा ये? But then I was like, अभी तो मुझे दिखाने सबको मैं भी कर सकता हूँ. तो I reached the semi-finals. Semi-finals I reached. ये एक और बात है, हिंदी के बारे में कितना बुलिंग हुआ? बुलिंग नहीं हुआ. इनफैक्ट हिंदी मेरा एक्चुअली प्लस पॉइंट था बिकॉज दैट्स व्हाई पीपल लाफ. मेरा हिंदी टूटी हुई थी तो दैट लोग इनफैक्ट दैट में मी फेमस. जिससे मैं भाषा में बात कर रहा था अब भी लोग नाउ इज माय कॉमेडी आई डू. बट दैट टाइम माय हिंदी वाज रियली फेमस कि वो कैसे हिंदी बोलते हैं. एंड दैट्स मेड मी फेमस माय हिंदी भाषा दैट टाइम. अभी तो मैं सीख गया हूँ बट दैट टाइम इट वाज वेरी फनी फॉर द ऑडियंस एंड दैट्स व्हाट मेड मी फेमस. वो तो ऑडियंस के लिए था, जो हम लोग देख रहे थे मज़ा आ रहा था आपकी हिंदी. पर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ये सब है ना, इट्स ऑल अबाउट एज ए सेट सेल्फिश होना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज यू वोंट विन. पर एक बंदा आ रहा है बिकॉज ऑफ उसकी हिंदी की वजह से फेमस हो रहा है, पर अंदर के लोग तो बुलिंग करेंगे. माय हिंदी वाज वेरी फॉरगेट हिंदी आई वाज लाइक बिकॉज आई वाज नॉट अ फाइटिंग पर्सन. आई थिंक पीपल जेल माय कैरेक्टर. मेरे कैरेक्टर के साथ बहुत जेल किया लोगों ने. एंड इवन इन खतरो आई वाज प्रूविंग टू द वर्ल्ड कि 6 पैक्स होने का क्या फायदा हो भाई. 6 पैक्स का बंदा पानी में नहीं जा सकता. I should do stunts के लोग मसली मतलब पूरा हर रोज 7 घंटे वर्कआउट करके वो लोग स्टंट नहीं करते थे. उसका स्टंट करता था. आई मीन पानी पीपल इन इंडिया डोंट स्विम प्रॉपर्ली ना बिकॉज देयर स्विमिंग पूल्स. यहाँ तो मैंडेटरी है कि आप स्विमिंग करो इन द स्कूल्स. सो आई शुड बी डाइविंग अंडर वाटर टू कीप माई ब्रेथ ऑल द वाटर स्टंट्स आई वन. ये जब कॉम्पिटिशन जो होते हैं, जो कंटेस्टेंट होते हैं, एक दूसरे को तो खींचते ही होंगे कि पुल देम डाउन समहाउ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फेयर कॉम्पिटिशन. मुझे भी अगर कॉम्पिटिशन में जाना हो तो विन होना ही होना है. एंड द गेम्स ऑफ द स्पोर्ट और एनीथिंग लाइक दिस इज बाय हुक और क्रुक. देयर इज नो डेफिनेशन, यू हैव टू विन. तो वो आप कुछ फेस किया जो आपको पुल कर रहे थे या कोई I mean, it's a See, fair with thing me, I anyway. think undercut, if I have a price, which I have a price, they undercut me saying, we will take this person this cheap. And okay. See, I'm not a very money-minded person. I have a price. I give them my price. We negotiate a bit. मैं इतना ज़्यादा negotiate नहीं करता हूँ, but I'm the kind, no one's really tried to bring me down. Because I've always been very nice to people. तो मेरा रिश्ता लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा है. And especially with my production company and channels. हाँ, jealousy मेरी तरफ बहुत आई है. Because obviously someone from NRI come from London. वो इतना बड़ा नाम लेके in 4 years is very unheard of. Because see, it's like मैं Big Boss में गया और boom हो गया. And from there, I've been getting work, touch wood, Baba's grace. I've been getting work non-stop since then.
So, you know, it's like, for them, it's like, अच्छा तुम तो लंदन में रहते हो, यहाँ आके तुम काम ले रहे हो, like we live here, हमको इतना काम नहीं मिलता है. Same people who live, who went here for 20 years, जो 20 साल से काम कर रहे टीवी के ऊपर, अभी तक लोग उस पर चाहते नहीं हैं. I feel bad for that because they've been working for 20 years, done 15, 20, 30 shows, and that fame is not come, which I have received with God's grace. Not in an egoistic way, I'm saying. It's just that it happened so that the 4 years I did, they were very big shows. And Sara shows बहुत ज़्यादा TRP लेके आए. 2.63, खतरे को clarity was 2.6, which is huge for India. That means 3/4 of the country are watching it. That's really 800 million people watching the show. So it's a big thing. ये आप इतने सीधे से और इतना पॉजिटिवली बता रहे हैं, पर आप घर से दूर हैं, अकेले हैं, वहाँ जानते हैं, पर थ्रू वर्क आप काफ़ी सारे लोग को जानते होंगे, बट एक घर में है, एक कंपटीशन में अपने कंटेस्टेंट के साथ है. और इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है कि शुगर कोट करके कोई बात करता है, सीधे ही बोल देता है यार क्या है, तुझे क्या है यार, तू तो हमारा ले रहा है यहाँ पे आके, ऐसे कुछ बात बोल दे. तो आप कैसे हैंडल करते हो? देखो ह्यूमनली इट्स ऑलवेज सामने कोई बात नहीं करते, सब पीछे बात करते हैं. अच्छा. और पीछे बात करते तो मैं बहुत स्माइलिंग के साथ मतलब निकालता हूँ. ना यू नो व्हाट, आई हैव कट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइफ आल्सो. मैंने फिल्टर बहुत किया है बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, मुझे व्हेन यू वांट टू गो अहेड इन लाइफ यू कांट कीप बैगेज ऑन यू. तो जस्ट बिकॉज ऑफ कीपिंग रिश्तास फॉर द सेक ऑफ बीइंग इन इंडस्ट्री इज नॉट द वे आई वर्क. आई वर्क मतलब जो लोग पसंद नहीं करते मैं निकालता हूँ. आई फिल्टर देम आउट. एंड even my own friends have spoken bad about me in the past, and I've forgiven them for that. But I think what it was is mainly insecurity कि ये लंदन से आए हैं, लोग हजम नहीं कर पा रहे थे. That was the word. They could not digest the fact that Rajiv was first this person who everyone went to for work. अब वो खुद celebrity बन गया, वो खुद इतना बड़ा हो गया, वो लोग हजम नहीं कर पा रहे. मुझे वो एक पॉइंट पे थोड़ा एम्फेसिस डालना है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत हेल्प होगा, मुझे भी हेल्प होगा. क्योंकि भाई कोई भी बंदा आगे से आके कुछ भी बोले, पीछे भी बोले, इट अफेक्ट्स यू मैन, इट अफेक्ट्स योर डे, इट अफेक्ट्स योर आवर. पर ये सब के बावजूद भी आप निकर के आए हैं, एंड यू नो स्टिल लाइक गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, टच वुड, आई होप इट कंटिन्यूज टू बी लाइक दैट. तो क्या फॉर्मूला है? ये आपका पर्सनालिटी ट्रेट है, वो तो पता चल रहा है, पर कुछ आप देना चाह रहे हैं लोग को समझने के लिए या फॉलो करने के लिए? To be honest with you, my only secret to this is don't listen to what people say. मैं किसी की बात नहीं सुनता हूँ. You know the thing with going ahead and succeeding in life now, आप सुनते आओगे ना लोगों का opinions, तो कभी आगे नहीं चल सकते हो. I have had people say the most nastiest things about me, and I just don't care. I am like बोलो जो बोलना. In fact, it makes me stronger as a person because I think very good. At least I'm being talked about. कुछ तो मैं कर रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं. And the thing with me is I don't let these things affect me at all in the slightest. I mean, अभी भी मेरा कुछ controversy आया था पेपर में 2-3 हफ्ते पहले, जो एक I'm not going to mention his name, I don't think he deserves that name, but एक लड़का था जो बहुत क्लोज है मारिस के साथ, and he's a influencer, जो भी बोलते हैं उसको, वो बहुत बदतमीजी से बात करता था about some of the legends. मैंने उसको सुनाया, and nobody has a guts to sit down this boy because they think he's very powerful. I surrounded him and I बहुत सुनाया उसको. Everyone knows what I'm talking about, but it was a very, and it came all over the news what I said, and everywhere it came, and I was like, listen, गलत है, सही है. Don't be scared to put your point across, yeah. And that's why I think Bollywood respects me for is that I'm not scared of saying my point. कल मुझे काम ना भी मिले ना, तो I'm okay with that. You're a very secure person हो, तो Very सीधे पता secure. चल रहा है. So the people when they talk about me or when they say bad things or they try to bring me down or whatever, it's okay. And I think that's what irritates them more, कि मुझे फर्क पड़ता ही नहीं है. There's people in India that will call, अच्छा भाई क्या हुआ, क्यों इसमें बारी बोल रहे हो, चलो हम बाहर जाते खाने के लिए, let's sort this out. मैं करता ही नहीं हूँ उससे. चलो ये हो गई आपकी बॉलीवुड की जर्नी, पर इतना अटेंशन आ गया आपको, तो अटेंशन के साथ तो काफ़ी सारे चीज़ भी मिलते हैं. अब लोग पहचानते हैं, लेटर्स आते हैं, फ़ोन्स आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो वो कैसे मैनेज किया? इट्स वेरी, आई मीन आप यंग हो. See, nowadays, I think in life, my focus purely is my work. I've been in relationships which ended very badly. I think my last relationship was like 3 years ago. And I think now it's even harder for me to get in a relationship because obviously who I am. तो मुझे समझ नहीं आते कि लोग कैसे मुझे देखेंगे, कैसे मुझे... I'm more fearful of dating somebody now than anybody else because I'm thinking now it's a different... Are they dating because of me or are they dating because of who I am or my career? So it's a very big confusion for me. Obviously, people, the fame has got very big. तो अभी भी मैं बाहर जाता हूँ, लंदन में ज़्यादा बहुत सारे होते हैं. Every day I go out of my house in London. At least 5-6 people ask me for pictures, which is fine. And I never say no to pictures because maybe एक ज़माना था कि fan किसी का जो मुझे भी picture था. तो I try not to say no to pictures. I try to talk to them. By chance, if I'm running for a flight and I can't, then it's different. But otherwise, I always say hi to my fans and take pictures with them. The positive that's come out of this is that God's given me a platform for something greater than being on Bollywood. I think Bollywood and being a part of the industry is just a stepping stone for what my real purpose is in life. See, comedy is why am I doing comedy and not a serious acting job or serious? Because comedy brings a lot of laughter to people, happiness to people.
And that's a seva I'm doing. I feel like because if you come from a long day at home, और काम करते हो, किसी दुखी हो, किसी का मतलब वो हो गया है, and you know, if I can make you laugh on screen, that means I'm doing something right, right? मैं कुछ खुशी लेके आ रहा हूँ आपकी जिंदगी में. So I think that's a good thing. That's a good way. That's my genre is very nice. But I do feel भगवान ने मुझे ये रखा है for a different purpose, not Bollywood. It's a difficult skill. I mean, amongst all the Comedy is, genres, yeah. comedy is a difficult one. And To make people laugh is the biggest, toughest thing. That's what. Unless it comes naturally, you won't be able Correct. to I agree. bring it out. पर इतना अटेंशन भी आया होगा बिग बॉस से बाहर आते ही, लड़कियां तो या लड़के जो भी, I mean, they should have been like throwing themselves at Well, they you. Especially हमारे कंट्री में एक बार चेहरा रील में आ गया, इंस्टाग्राम में बाहर आ गया तो उसको तो पीछे पड़ जाएंगे. आपको आए वो तो आपकी इंडस्ट्री से भी आए होंगे ना, ये तो बाहर से भी नहीं, अंदर से ही आए. बहुत सारे आए, बहुत सारे देखा मैं, बहुत सारे गए भी. I was like next because I don't see. I'm the kind of person I will not date somebody in my industry. First of all, secondly, I'll not date a fan. Okay. And thirdly, I want to date somebody I don't know for a very long time, or somebody who does not know who the hell I am. So my list is very short. And I think now with my work schedule, I'm so busy. And like this is the only time I've been for 6 months because my mom has been ill with a heart problem. And now she's much better. I'm going back. But otherwise, I have been non-stop for the last 5 years. शादी के बारे में क्या विचार है शादी को विचार क्या है? शादी and me don't get along. I think the reason being I don't believe in the institution of marriage. I'll tell you why. It's very clear with me. I have seen many people get married and get divorced very quickly. I think being somebody in the wedding industry that's done a lot of weddings and doing events before I was famous, I think, you know, शादी एक contract होता है, I feel. And I believe prenups are essential in marriages nowadays, especially someone like me. I know people, a very good friend of mine is Goldie Hawn. She's a very big Hollywood actress. She's a very good friend of mine. And she's been with Kurt Russell for 44 years. Not married. And they had the option to get up and leave whenever they want without any. What is marriage? आप जाके साइन कर लो कि मैं शादी किया है. At the end of the day नहीं चलेगा तो क्या है? आधा पैसा आपको, आधा पैसा आपको, right? बच्चे साथ में हैं, ये वो है. It's a nice. See, it gives you security. कहाँ? What it makes it is like तू मेरा है बस. Like if somebody can still leave, somebody can still cheat on you, somebody can still do anything they want, but it's a financial contract between two people. That's what I don't want. I don't want someone to tie me down. I've never understood this thing of marriage. कि मतलब if I get married to somebody, 6 महीने के अंदर कोई divorce करे मेरे साथ, तो पूरा मेरा life का जो मैंने बनाया है तेरा. Why is that possible? Prenup होना चाहिए ना भाई, मेरा तेरा. जो हम साथ में बनाते हैं, आधा करो. But my mother's house, my ancestral house, my father's money, why the hell should I share with you for a reason? That's why I believe in prenups for sure. Prenup होना ही चाहिए कि शादी से पहले जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, और जो शादी से पहले तेरा ही रहेगा. हम जो साथ में बनाते हैं बाद में वो हम शेयर करेंगे. I don't believe this is one thing. And what is your opinion about kids? Do you want to have kids? Kids, of course, I love kids. If I have kids, I'll definitely have kids. But I know one thing very clearly. With my lifestyle now, I don't think I can have kids. But if a child is meant to be in my destiny, I'll have one for sure. And I love kids. I think now, not right now. Maybe in a few years, but now, but I'll love a child. Just let's go back to the Khatro. I can't even keep a pet. I can't even keep a dog. I want a dog. I can't even keep a dog because I have no time to look after a dog. Do you believe me? So how I look after a bachcha? Tell me. लेट्स गो बैक टू खतरों का खिलाड़ी. 2-3 चीज़ मुझे मालूम करने हैं. ये जानवरों के साथ कुछ एक्सोटिक एनिमल्स को देखने का मौका मिला, और कुछ फ्रस्ट्रेटिंग भी होंगे एनिमल्स हैं. I was petrified of these chihuahuas and cockroaches and snakes. In fact, my first stunt with an animal was lions. I was in a cage with lions. Lions. It's like a gladiator ball like this, and inside the middle of it. वो आपको हिंदी में समझा देते हैं या इंग्लिश में समझा देते हैं? हिंदी में एक बॉल होता है, और इसके अंदर मैं खड़ा हूँ, एंड दिस लाइक एक छोटा सा गेट होता है, उसके वो नहीं जो एयरपोर्ट में जाते हैं बैगेज, दे पुट दिस जिप्स, वो क्या बोलते हैं वो, तो दे पुट दिस on the cage door to lock me in. They put a zip tie. I was like, मेरा protection क्या है from the lions? They got the zip tie. I said, what? They said, हाँ ये खींचेगा तो खुल जाएगा, but just sit down if that happens. I said, bye, these are lions, like not tame lions, they're proper lions. They put pieces of meat around my cage, so the lions come to the cage. And my task was कि जाके discs उठा with the like push the thing with my hands and pick up these discs that were attached to the ball. I was like, ठीक है. जब lion बाहर आए, सीधा मेरे पास आए, and they literally were this close to me, and I could see the eyes looking, the lions looking in my eyes, and their claws were inside the cage with me, and their claws were huge. And I said, आज मैं मर गया है. But luckily they started fighting themselves. पीछे तो मैं आगे चल गया, and I won that task. So I was the first thing I had was lions. Then the cockroaches. In fact, the worst animal I had was cockroaches. The worst. Cockroaches का क्या था? I had 6,000 on me. On you? On me. 6,000 cockroaches. They're biting me in my hair. That was the worst thing I had, cockroaches. And rats, I was buried alive. But मुझे दफनाया गया था with 100 rats, चूहा के साथ. काटे?
काटे मिंगा ऐसे करते थे मुझे, बट Cockroach. cockroach ने बहुत काटे मुझे. And then I was with snakes. I had pythons, 4-5 pythons on me. I had lizards. I had mini crocodiles. I had, oh my god, मैं क्या क्या किया मैंने अभी तो. When I think about it, I'm like, what the hell did I do? मैंने बहुत सारी चीज़ किया मैंने. पानी, I was shocked, electric shock कितनी बार. पानी अंदर, ice cold water. I should jump off aeroplanes in the Vodafone building. मैंने बहुत कुछ किया. ये हो गया आपका बॉलीवुड. लेट्स गेट टू द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हिच इज आई वुड से मोर अमेजिंग देन दिस वन एंड फैसिनेटिंग रादर. ये क्या हुआ भाई आपको? आप ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से सीधा स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल साइड आ गए I've हैं. always been spiritual. तो कहाँ से शुरू हुआ? I've always been spiritual. I've always been a Sai Baba Bhakt. Sathya Sai Baba especially. कहाँ से शुरू हुआ ये? बचपन से, my father. My father was a big आपके Bhakt. पिताजी भी थे? Pitaji was a very big Bhakt Baba, and I think that's where my foundation came from. And that's what's always kept me grounded. So the answer to all your questions is how I've done this culture shock is because of my spirituality. It's always kept me very humble, always kept me very grounded. I think that's what's kept me going so far. Baba's always somebody that I've always looked up to and always been guided by him. कब मिले पहली बार उनको? I met Sathya Sai Baba in 2001 first time. And he told me in the first time I met him, क्या बोला? he said, pass your 31st birthday, you'll be a household name. I thought, होगा कुछ ना कुछ. I never knew this would happen in my life. तब तो आप सेलिब्रिटी भी नहीं थे. That's तो 15 जब आप उनसे मिलने गए तो आप नॉर्मल कॉमन मैन की तरह गए मैं होंगे. 15 साल का था. And कितना देर वेट करना पड़ा मिलने? it's really shocking. I met him straight away. The first day there, first day he called us inside. And लोग 25 साल से बैठा कभी उसको मिलना भी नहीं है. पता नहीं मेरे साथ ये क्यों ऐसा होता है. I sat for the first session he called us. And first time I ever went to see him. उसके बाद में I think I had about काफी सारे इंटरव्यूज मेरे हुआ है. क्या बताया फर्स्ट टाइम हम उनसे First मिले? time बोलते वो आपको क्या बताया, आप उनको क्या बताया? First time I looked at my eyes, he goes, you have very nice eyes, you have very powerful eyes. अब क्या करते हो? And I said, Baba, do you drama music? ड्रामा 30 सेकंड भर्ती के बाद तो बहुत फेमस हो जाएगा, हाउस नेम हो जाएगा. तो बस इतना ही बोल दिया सीधे. Then he told my dad के साथ क्या हो रहा था, किस हॉस्पिटल में था. He told my whole dad's history without me telling me anything. कि he was in this hospital, that hospital, ये किया, वो किया. He told me everything. My mother was with me. He told me that your grandfather just died, which he did. He said he's been reborn again. He was telling me things without me telling him. That's what impressed me. कि मतलब हमने कुछ बोला भी नहीं था उसको. And वो सब बता रहे, डॉक्टर्स का नाम with names, like he was telling us a lot of things which nobody knew. I did that, and then उसके बाद, you know, I've taken Baba along with me in all my journeys and all my work. So आपको did that actually made you Swami Bhakt? Because he's sort of like, मैं क्या जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मली हम किसी से मिलते हैं, स्पेशली एक बिग पर्सनालिटी जैसे बाबा है, उनसे मिलते हैं. जब हम मिलते हैं वो कुछ बता दिए तो ऑलरेडी हम हाफ इन्फ्लुएंस हो चुके हैं क्योंकि हम वहाँ पे पहुँच गए हैं. बोलते ही उसी बात से इन्फ्लुएंस हुए. आप तो बच्चे थे एंड किड्स इट्स वेरी इजी टू गेट इन्फ्लुएंस, बट देन टू कैरी ऑन. हम यहाँ पे भी देखते हैं, इंडिया में तो काफ़ी सारे, अभी आप बता रहे थे कोई बाबा है, इसे बोल देते हैं एंड इट कुड बी ए कोइंसिडेंस, इट कुड बी ए गेस, इट कुड बी एनीथिंग. बट वो पहली बार आप जो मिले हैं वही चेंज कर दिया आपको कि यार मैं अभी I was never impressed by his miracles. I was never impressed by कि मतलब ये हाथ से ये निकाल रहे हैं. वो लोग वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट नहीं किया. What attracted me to him and what made me believe in him was his service. बस मैं कि ये बंदे इंडिया में रह के ना वो ट्रैवल करते बाहर, ना वो किसी के पास जाते प्रवचन करने के लिए, ना वो खट्टे कुछ करते, ना वो टिकट्स मतलब बिकते हैं मिलने के लिए उसको. वो एक जगह बैठ के इनपुट पढ़ते हैं. You have this huge hospital for the poor. You have this water project. You have all these things for the poor. He's doing this for free. इंडिया में कहाँ मिलता है ऐसे? And the transformation I was seeing, like I saw transformation within me. That's why I got closer to him, because I saw people going there. कि लोग बहुत कमीने थे, बहुत गंदे लोग जा रहे थे, वो आके इतना अच्छा भक्त बनते थे. तो that transformation you do with people ना was what really attracted me to him. हाँ, these miracles and all were obviously things you'd get impressed by. You do get impressed by them, but it's never what I thought of him. I thought of him as somebody like that who has an orange robe. He has no property in his name. कुछ भी नहीं, पर वो सब सेवा सबके लिए कर रहे. And that's what attracted me to him. The only a godly person can do that, who's so detached from worldly desires, can do that for the people. आपको easy access मिलता था? बिल्कुल भी नहीं. Nothing doing. Baba was one person that you could be the prime minister of the country. You had to wait in line to see him. If he called you, उसको हुक्म था तो मिल. I've been many times I've been there. He used to walk right past me and never used to call me. But it's up to him, and that's what I liked about him. There was never any favoritism towards him. It was always you sat there in line. You would come if you wanted to speak to you, but otherwise you completely ignore you. कौन से लैंग्वेज में बात करते थे उनसे? Hindi and English. उनको हिंदी आती थी? In fact, I must tell you a story. There was a time when I was with Baba, I think 2008, I had an interview with him. He called me inside. And with me was a Russian lady, a Chinese lady, and a Spanish lady. So a Spanish man, a Chinese lady, a Russian lady, and me. And two other people there. And Baba was there, and he was talking to us, and hum sab has rahe the, he was cracking jokes, and baat kar rahe the, and he was showing his miracles and whatnot, and what happened. And he was telling us, you know,
about our lives and all, and we were sitting there, whatever. After we came out, I told the lady, oh, such a nice interview, na, kitna acha bola, you know, oh my God, you're so blessed, he says about you. And she could not understand a word I was saying. And I was looking at her, why not understand? Like, they could not understand a word I was saying. So I told, we came outside, and I was in the Chinese lady, same thing, she would not understand English. And Baba was talking English. So he came outside. One of our group people came to her and said, how's the interview? And they're talking in Chinese and Russian or whatever. I said, do you understand English? She goes, yes. I said, ask them that. Do they understand what I'm saying? They go, but they don't speak English. So I said, well, how did they understand what you were saying? So they said to me, the Russian person heard Russian, the Chinese person heard Chinese, the Spanish person heard Spanish, and I heard English. We all heard our own languages in the interview room. And I asked them, what was he speaking? They go, he was speaking in Russian, he was speaking in Chinese, the person is speaking in Spanish. But I clearly heard English. So that's one of the biggest experiences I had, that everybody in the interview room heard their own language when you're speaking. तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि स्वामी के भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स है लाइफ के. एक तो है वो स्पिरिचुअल साइड एंड देन सर्विस विच इज़ अ मैसिव थिंग. तो आप बता रहे थे कि सर्विस इज़ व्हाट इंस्पायर्ड यू मोर टुवर्ड्स इंक्लिनेशन एंड बिकमिंग अ डिवोटी ऑफ स्वामी. तो आपका कौन सी चीज़ सर्विस में उनकी पसंद है जो आप लेके चल रहे हैं आज भी एंड आगे भी जाएंगे? I think loving people, I think that's the biggest thing. I think जो प्यार होता है, I think the way you should love everybody, not judging people कि कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, just प्यार सबको बांटने के लिए. I think in this world nowadays ये बहुत कम है कि लोग सबको प्यार करते हैं, सबको बहुत अपनापन दिखाते हैं. I think that's what's missing: unity, love, brotherhood. But main thing is also the service for the hospital, like for the needy people. पोर्ट के लिए बहुत कर देते हैं. And I think nowadays, when the world is going such a hyperinflation, hyper time, people can't afford things. So जितना भी सेवा करो in your own way, चुपचाप करो, किसी को बिना बोल के करो. कितनी बार मिले आप स्वामी से? काफ़ी बार मिला. रेगुलरली जाते थे इंडिया? आई थिंक एवरी ईयर तो जाते थे, एक बार 2 बार. 20-25 पाउंड से मिला उसको, 25-30 बार तो मिला पर्सनली. ये बर्थडे सेलिब्रेशन कब से स्टार्ट किया? बाबा's birthday celebrations started in 2005 when I was 18 years old. Just before my 19th birthday. Because my father passed away and I thought I have to give back to Baba. So I taken Baba's blessings in Puttaparthi and so I'm going to do this function. हाँ करो करो, शानदार से करो. So I started this and I've had every single come to perform. I've had Shan, K.S. Chitra, I've had Sadla Sargam, Richa Sharma, I've had Suresh Watkar, Alka Yagnik, Kavita Krishnamurti. All the singers you name, I've had them at my function. They come perform for Baba for his birthday here in London. And it was all free. So people were like, oh my God, a Bollywood singer is coming for free. ये कैसे हो गया? I'm like, देखो बाबा ने बोला करने के लिए तो पैसा अपना पा जाएगा. That time obviously I was not sponsoring myself. That time I had a lot of sponsors helping me. And till today people are helping me. Like I'm the main sponsor, but I have other people helping me also. वो चीज़ मैं एक मिस कर चुका था, वो जो हमारे प्रीवियस अदर साइड था एंटरटेनमेंट. ये रिश्ता कैसे बना आपका शिल्पा शेट्टी जी का और शमिता शेट्टी जी का? I worked with Shilpa and in fact मैं इतना close नहीं था उसके साथ, but Baba के through because she's a big Baba Bhakt also. So through Baba we connect and Shilpa became she still is my Rakhi sister. She's very close to me and बस I think Shilpa बहुत दिल की अच्छी है. दिल की बहुत अच्छी है, बाबा की बहुत मानती है, बहुत गॉड फीलिंग है. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी रियली बॉन्डेड. आई थिंक अभी तक हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये तो इट्स एन अमेजिंग ब्लेंड. आई एम श्योर इट इज़ हेल्पिंग यू. दैट्स व्हाई यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग कि एक तरफ इतना स्पिरिचुअलिटी आपका चल रहा है और दूसरी तरफ काफली है पोल्स अपार्ट सॉर्ट ऑफ करियर पार्ट दैट यू हैव. क्या कहेंगे आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ क्योंकि किसी का ताल्लुक नहीं होता. आई नो दैट लोड्स ऑफ बॉलीवुड सेलेब्स और जो भी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं वो भी स्पिरिचुअल होते हैं, पर इतना एक्सटेंड नहीं होते हैं. टू पुट इट ब्लंटली, दिखावे के लिए होता. आप ऐसे नहीं हो, आपको भी पता है, सबको पता है. आप ईयर ऑन ईयर बिग स्केल पे कर रहे हो स्वामी का बर्थडे और इन्वॉल्व होते हो और स्पिरिचुअल भी हो. तो ये कैसे मुमकिन है एंड व्हाट बेनिफिट यू थिंक यू गेन्ड आउट ऑफ इट व्हिच यू कैन शेयर एंड पीपल कैन लर्न? See, Baba's birthday purely for devotees. It was my gift back to Baba to make sure the devotees enjoy. This function actually is the biggest function outside India. Because we have every year तो 2000 आते हैं, ये साल 3000 लोग आए थे. But my thing is giving back. Make people happy when they leave. See, Baba was always sitting very clearly, see me and everybody. So even as devotees, I try to see him and them. And when they go out happy, I think Baba is happy. And I think it's more community service that I wanted to feel like Baba is Prashanti Baba, Puttaparthi is in London. So we make the stage like that, we make the smell like that in the hall, pura jasmine dalti pura hall mein hum. And because of that atmosphere we create, that creates a very big... And honestly, I'm just doing it to say thank you, gratitude to him. For everything he's done for me and helped me. It's something which I am giving back just to say thank you. So it's my way of saying thank you to him. आपने बताया कि आपको मिला है for the things that you got from him and gratitude बता रहे हो. क्या मिला? Love. उससे ज़्यादा love मिला, materialistic चीज़ बहुत मिला, but love more than anything. The feeling of somebody is there for me. The feeling that कोई है हमारा जो काफ़ी. Obviously I believe in God. I am a very spiritual person. मैं सब भगवान को मानता हूँ. I don't have a particular God I pray to. I believe in Allah. I believe in Hindu gods. Baba's taught me like that to believe in everything. So if it's a mosque, if it's a church, if it's a temple, I pray everywhere. मुझे कोई वो नहीं कि I'm actually like that generally.
I believe in all religions. I think Baba being there and guiding us in the right way, I think that's why I'm thankful for the most. It's that it gave me an understanding of life, how to live my life better. So I think that's the one thing I'm most thankful for. कुछ experiences हुए? बहुत सारे, like, in the way that, just an example, I'm telling you that, when my dad was very sick, and he was very, very sick. After he passed away, I was very upset for many years. And Baba said to me, how would you feel being in that situation? Being in the wheelchair? I said, Baba, I wouldn't like it. He said, whenever you see a sick person and you see their life, always put yourself in their shoes. You're being selfish to keep your father here because you wanted him, because you want the attachment. When I'm your father and your mother, why are you worrying? Your father's with me, everything's fine, don't worry, everything's fine. And I'll take care of all your needs, he said. Now, whether it was materialistically, for sure, no money was ever given to me by Papa. I'm just saying, for him to even say to me, I'm always here for you and taking care of you. When he said that, he meant it. Since that day, everything I prayed for, everything I wanted, I've always got. And just having him be around me and having I can't really want to know, there's hundreds of experiences where the littlest things have changed in my life, or I've prayed for something, or I've seen him somewhere, or koi mere paas aaya, usko photo diya mujhe haath mein, or him showing his presence to me all the time has shown me that closest towards him. So I think I can't there's no one thing, there's thousands of things. But one example I'll tell you which actually struck my heart. I'm talking about it. There's a lady who went to Baba once called Geeta Ram, and she had an interview with Baba. And Baba made tears of Vibhuti for her, and he put it in a paper. And he said, don't eat it here, take it back to London, to America with you. So she thought it was for her husband. So she took it back to America with her. Opened her bag. To her husband, she couldn't find that packet anywhere. She was guma diya hai. She searched the whole house. She couldn't find this packet of Vibhuti Baba given her. Cut to, she went to a play in New York, and she went to a play with her husband. And in the interview of that play in New York, she went to the bathroom. A Hispanic lady was working there. She was cleaning the bathrooms. And she was there, and she went to the bathroom, and the Hispanic lady was a Christian, and she couldn't speak much of English. She was Mexican. She said, do you know Baba? No, she goes, Booty, you know Sai Baba? You know Sai Baba? And this lady, being so close to Baba, Geeta Ram, said, yeah, I know Sai Baba. How do you know Sai Baba? She said, I don't know any Sai Baba. But he came in my dream last night and said, a lady's going to come to your work tomorrow in a sari from India, and she's going to give you booty. So she said, booty means what? She goes, Vibhuti, obviously, Vibhuti, right? So she goes, she's going to give you Vibhuti, take it and give it. And her son was dying of kidney failure, and he was 9 years old. So she was given this Vibhuti, and your son will become fine. So this lady said that he came in her dream. She goes, yeah, I don't know who he is. I was praying to Jesus, but he came in my dream. And she opened her bag to see, because Sai devotees generally carry Vibhuti with them mainly. And she opened her bag, and that packet Baba had given her in the interview room was lying on top of her bag that she could not find for 2 years. So she's saying, I knew that packet was not in my bag because I put everything in my bag. It's a brand new bag. So when I opened the zip, it was lying on top. And then I realized it was for this woman. So I gave this woman the packet. And she goes, a year later, I went to Baba. And the first thing Baba said to me is, that child is fine. His kidneys are fine. The Vibhuti cured him. I wanted this packet to go to him. She goes, I forgot that even happened. He reminded me. So it's stuff like that. How do you explain stuff like that? It's difficult. You can't explain things like that. It's so amazing. और इतने सारे लोग benefit ले चुके हैं और ले भी रहे हैं. एक तो materialistic है, वही तो value है आज के दिन में. आज today's world materialistic things sell more. उस तरफ भी he has done so much. Services so much. और आपने कितने सारे millions of people, not just in India but across the world, has taken benefit as in a spiritual way or in a service way or in a materialistic. पर still उनके ऊपर काफी सारे criticism भी आए हैं. काफी. Which is fine, क्योंकि अच्छे इंसान हैं, बुरा भी बोलते हैं, बट जैसे आप इतने डिवोटी, इतने अटैच्ड हो, आप पे क्या गुजरता है? जहां अच्छा है तो बुरा तो लोग बोलेंगे. That's one thing where there's good, people speak bad. The only thing I love Baba for one thing very clearly, जितना उसके ऊपर criticism था ना, वो कभी कुछ बोला ही नहीं. He's never clarified anything, which I thought was the best thing. So you have a man in India, take him away of being a guru or whatever. You have somebody where President Vajpayee is bowing down to him. You have ministers bowing down to him. You have singers bowing down to him. You have actors bowing down. So somewhere it does scare people. Like, ये बंदा है कौन? People didn't know him. Like, who is this man? कि पूरा industry or politics are bowing down to this man, not understanding who he is. So many things have been said about Baba. So many things that, he's a con man, he's this, lingam से यहाँ निकालते हैं. I didn't believe in him. I thought these chains are being taken out from here and there. पूछा आपने? और मैंने सामने पूछा उसका. क्या बताया? Because I said to my mom, I don't believe these rings and things. मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं इसमें. And he told me, he goes, one of the first things he told me that he goes, लोग को ये लगता है कि मैं यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ. Literally, because तू ये सोचता है ना? ऐसा, yeah, I think I did say that. But this was my father's wedding band, in fact. This was. It was actually a wedding ring. Is it your dad's wedding? This was a wedding band like this one. Okay. And he goes, तुझे लगता है ना मैं झूठ बोलता हूँ? So I didn't say anything. I was very scared of saying something. And he took me with my fingers like this. And it was just a wedding band. I was sitting there and he took my fingers. The finger it's never leaves my finger because it's too tight.
So never left my finger. The ring was like this, and he just took my finger, just and it turned to this. And all I felt was weight on my hand. Oh, is it given by He Baba? used to Baba this give one? my Baba, yeah. He used to give my Baba. And this is where it turned into this on my finger. So, I mean, it was just, how could you explain that? It never left my finger. So, I was like, हाँ, ये तो कुछ है. Yeah, I mean, मैं तो उनके बारे में तो कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ. He's such a big and beyond words, And beyond these are very little explanation. things. These are very little materials. तो आप पे क्या गुजरता है? Because आप तो it's like this, you know, in a very simple terms. एक होता है एक्टर, उनके होते हैं फैंस. एक्टर को क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ही गोज अबाउट डूइंग हिज बिजनेस, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. बट फैन पे तो पड़ता ही है. तो इट्स जस्ट एन एनालॉजी, आई एम नॉट कंपेयरिंग लाइक यू नो एग्जैक्टली, जस्ट एन एनालॉजी. आप पे क्या गुजरता है? अभी कोई आके बोलता है क्या ये क्या मुझे है? कोई फर्क नहीं पड़ते लोग क्या बोलते हैं. सी आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस. वो मेरा काम नहीं है लोगों को एक्सपीरियंस देने के लिए, उसका बाबा का काम है. मैं तो भक्त हूँ भाई. आपका काम है उसको कन्विंस करने के लिए. ये आप सी आई ऑलवेज बिलीव अ गुरु हैज एंड अ शिष्य हैव दिस रिलेशनशिप. People don't believe. I've had my experience. Before my experience, I was also doubting Thomas. But he proved to me that he was there. See, he gave me that experience. So it's his job to give that experience to them, not mine. What do people believe in him or not? And I believe through people's experience with him, they do change. But for me, it's not my place to go and convince people. That's what Baba didn't want that also. He didn't want agents going and representing him. He always said, "Ye mera kaam hai." You know, and he's not come down to earth to bring you into his cult or what people say, uska cult hai, nahi hai cult kuch. He's somebody who just come you to build up your faith in your own religion. He's not a religion. He believes in all religions. So he's somebody that was just there to help mankind. And I always believe they will always, whether it's good, people always speak bad. So that's just the name of the game. शायद गुरु हो, Jesus Christ को नहीं छोड़ा यार. वो भी सेक्रीफाइस हो गया था. अल्लाह को नहीं छोड़ा, बुद्धा को नहीं छोड़ा, मतलब हमारा सब हिंदू को नहीं छोड़ा. महाभारत नहीं था. तो एवरीवेयर देयर इज गुड, यू always going to get bad. I mean, Jesus died on the cross to save his devotees, and he's the son of God. So I mean, what do you expect? I mean, nobody in that field or nobody who is divine has ever had it perfect. They've been scrutinized the most. Baba's no different. He's been through that also. I think स्वामी जी के तो इंडिया में तो कोई कुछ नहीं हुआ, बट during the phase where No, बल्लान इनमें बहुत हुआ है. आई थिंक बहुत ही कम परसेंटेज में था. काफ़ी कुछ जो भी हुआ मेरे हिसाब से शायद वो बाहर हुआ, स्पेशली BBC डॉक्यूमेंट्रीज जो आए. All the things that miracles that he used to do, it's been questioned and you know it's been challenged. तो वो तो हो गया उनके criticism, which is fine, you know. It doesn't really care. You don't need to care either because he's not there, but still his service. See, when it comes to BBC is documentary and all still these there. things, and admittedly, I've been with him alone in the room many times, just me and him. Nothing's ever happened to me. So I'm saying it's not about when you're doing documentaries, all these things about forget Baba, about people in general. You have to have certain amount of evidence before you talk, and there was not really a certain amount of evidence. It was all hearsay. बात तो थी, damning evidence तो था नहीं. दूसरी बात, और जो इंसान इतना अच्छा कर रहे हैं दुनिया के लिए, you're focusing on some things people are seeing bad of him. What about the good things that man has done? He's giving water to 3 million people in Hall of Tamil Nadu for free. He's built a water plantation which is $70 million, not taking one penny from the government to build that water plantation. His checks in the civil specialty hospital per month are 27 crores for 2 hospitals. He's not getting government funding from this. Devotees are paying for this. So I'm saying what he's doing for the world is far more greater than the accusations he's getting. Oh, had got. Now to kuch bhi nahi hai, but that time, again I'm telling you, at that time, someone so powerful of him in the way of bringing people, not power as in status power or political power. He had the power of bringing devotees to him to serve. That is a threat. When your own country is not doing it and a guru is doing it, then there's a problem in your system. And that's what people were saying, भैया हमारा देश नहीं कर रहा, ये बंद करे, कैसे हो सकता है? So there was a lot of criticism on that level that, you know, who is this man? Like, he's a big name, he's a big guru. बहुत अच्छा बताया आपने. और उनकी तरफ से जो भी सीखना है बहुत सारे एरियाज है which people can inspire and learn. If you think that supernatural things you don't believe, service is there to believe. It's proof of it. Pudding is in eating. His services are all over the place. Everyone knows it. पर आज के जो जेनजीज है वो तो अटेंशन स्पैन इतना कम है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं है, और हर चीज़ क्वेश्चन करते हैं. और अगर वो लोग को लगता है कि भाई मुझे फॉलो करना है क्योंकि इतने सारा अभी आप पता है कि so many millions of people actually having water free of cost. There's so many other things also. पर उसको वो लोग को they're always challenged, right? मुझे फॉलो करना है पर they always look at the things that are criticized, questioned, challenged. तो आपको वो लोग को क्या बताओगे कि what? It's very simple. तुम लोग किम कार्दाशियन को क्यों फॉलो करते हो? It's very simple. Na? You follow Kim Kardashian for what reason? Why do you buy her skims and underwears and bras and
nonsense because you're being fed this. Today, why do you follow Cristiano Ronaldo? Because he's a footballer. So you follow him because his famous number on Instagram. When you're a big number and a blue tick, you think that person is valid. There's validation there. Thing is, not all people in this generation understand what spirituality is. They think it is praying in a mandir every day. They think it's ghanti bajao, agarbatti karo, ye puja pat karo, bed kaise karo. That's wrong. Spirituality, and Baba never teaches that. Forget Baba, I'm talking about generally. Spirituality is being a good human person, good human being first of all. Problem in this generation now is there's too much of social media. When we were growing up at my age, there was no TV, there's no phone, there was no social media. So we understood what going outside was riding a bike was. We understood was going to the cinema. 10 pound गाड़ी में धोता था तब मुझे 10 pound मिलता था बाहर जाने के लिए. So we understood the value of money. Now everything is in your hand. So that this generation will never understand what true spirituality means and what true hard work means. Because what we went through in the 90s, these kids will never know. They'll never understand the value of what 10 pounds means back then. Yeah, this one pheko zindagi wo kuch ice cream na mila. So I'm saying that for them to be spiritual, understand spirituality, yes, people are spiritual. There are people, a lot of kids are good towards this path. But it's what you are seeing on your social media. There's too much of wars and this and that and fame that people are buying cars. You have to buy this kind of clothes. And less spiritual there's less spirituality being fed in you and more materialistic being fed in you. And industries like this being fed in you, which is very different. Yeah, when you said spirituality is being good human being. बहुत अच्छी बात है. आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे थ्रू बाबास लर्निंग्स सो दैट जो भी वो पाथ में जाना चाह रहा है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कि यार I want to head into that direction. See, I don't think, forget Baba, I think anything, whatever you believe in, this is my main thing. No one should want to come to Baba like that. If you're a Christian, be a better Christian. If you're a Sikh, be a better Sikh. If you're Muslim, become a better Muslim. Baba is not somebody he wants you to come to him. Baba wants you to have more faith in your own religion. And if you want to learn his teachings, it's very simple. Love all, serve all. That's his main fundamental reason. And he's always Can you said, repeat that, please? Love all, serve all is his main fundamental reason. And that is what his main thing is, love all, serve all. And that's what your definition of Yeah, being a good 100%. human being. Being love people. I think he's never wanted you to come to him and pray to him. Never. He just wants you to become a better person. And whatever you believe in that. Whatever you believe in it more. कैसे लगा आप when he left the world? Where were you? कहाँ पे थे? I was in London. When I heard it, I knew it was coming because I think we were very prepared he was coming. The time was coming. And I heard, obviously, I was very sad. Like everybody was very sad. But if you know about as long as we do, you know this is just the body. It's not him leaving. It's just the body leaving. So he's always with me. He's here listening to this conversation also. He's very much with me. And it hurt. I mean, obviously, it didn't. It definitely hurt for a year. It was very sad going to Prashanti and not having him Puttaparthi there. But we're beyond this. Today, I'm going to go. My body's going to leave this body. It doesn't mean I'm going to be anywhere. I'll transition to something different. But people like that are always with us. They're always around us. And I believe there's a third dimension. I believe there's people. There's a different plane on earth. Some people, there are people here listening to us. So, आप गए देखे? yeah, I've experienced a lot of supernatural things. No. I was saying जब वो गुजर गए थे तब वहाँ पे आप गए पुट्टपर्थी? No, I didn't go that time. I didn't want that vision of him being in. I didn't want that last vision of him being like that. Very emotionally drained to know the news? No, I thought he became better. I thought now he's out of this body. He's become bigger. If that makes sense. I thought he's more powerful now than he was in that confined body. I thought now he's the real Baba. So like, you know how you believe in Krishna or Ram, you have that very big entity or Jesus Christ, you have that very big thing that they're around all the time. Even though I knew he was around that time also, I thought now his mission begins. कब last time बात हुई उनसे? I think 3-4 months before he passed away. 3-4 months before he passed away. Last time, Baba's birthday was there. And I had gone to ask for permission to Baba's birthday. He said, करो धूमधाम करो. He was तो खुश है ना? ऐसे मैं बहुत खुश हूँ. मैं तेरे साथ हमेशा हूँ. That's it. Last was मैं तेरे साथ हमेशा हूँ. कितना टाइम देते थे आपको बात करने के लिए? I mean, इंटरव्यू में 1.5 घंटा. 1.5 घंटा बैठ के उनके साथ समय बिता देते? The interview depends. 1 hour sometimes. Minimum 1 hour होते थे. बाहर दर्शन में just very quick. If you call for an interview, then yeah, an hour. आपको दिया विभूति वगैरह दिया? काफी दिया. है आपके पास अभी भी? अभी नहीं, घर पे. अभी घर पे हमें नाज़िन. हाँ, I have. काफी दिया. वो खाते हैं लगाते हैं टीका दोनों? I have a picture also. Baba's in my house. I have a picture Vibhuti comes out of. For many years it comes out of my picture. One of the pictures in my house. So yeah, that's for many years. But I have a Vibhuti. I take it every day before I leave the house. Mandatory here. It's protection. So yeah, I mean, there's one story I'll tell you. I was driving on the M40, and I was driving my X5. I'm just to give you the car's name to 3 dimensions. That my car was X5 was quite high and the van was like this. I was driving and I saw an orange light come in my car. And I saw on the left and in my head something telling me move to the left. So up my handshake is going and I park on the hard shoulder and the car behind me has an accident with the van in front. Now if that was me, my head would have been cut off because we were level. Because my car was very high car. And I could smell Chandan and I knew it was Baba straight away because orange light had come and I could smell him. I could hear him in my head. So the next day I told Mom, same day I said, Mom, I'm going to Bangalore tomorrow. She was, why? I said, I'm not telling anybody. I didn't tell a single soul what happened to me.
I frantically went to Baba. Mom goes, "Why are you going? Just stop ठीक है? Is your health okay?" Everything. I said, "Everything's fine. I just want to go and see him." Not knowing he'll speak to you or not. I went to Bangalore the next day. I sat in Darshan Lines, and here's Sachin Tendulkar, and here's Isaac Tickrit from the Hard Rock Cafe, who owns the Hard Rock Cafe. And Baba comes out, and that day he doesn't talk to anybody at all. And he comes and he stands in front of me and he's telling Isaac, "This boy has come to thank me because yesterday in London he had a car accident. I came in the form of an orange light and chandan smell. And I told him to move his car to the left." He narrated the whole experience in front of me. And then, so Baba had come out and he'd come right in front of me and he'd said to Isaac, he said to Isaac, "This boy's come to thank me in London. He's come to thank me because yesterday in London he had a car accident. I came in the form of an orange beam and he could smell chandan and I was telling him move the car to the left." And he looked at me and goes, "Isn't that right?" I said, "Yes, Baba, that's right." And I was profusely crying because obviously that's something which only I knew. I didn't tell a single soul. So he had narrated exactly what happened to me in the car. I got goosebumps. Yeah, it's a very powerful story. Chilling story. So then it's very hard not to believe. He's showing his presence all the time. So it's very hard then not to believe what he's saying. How do you think he's still giving his advisors, services to the world? तो आप you were lucky, आपने उनसे in person मिला है, experience किया है. पर अभी जो जेंजीज हैं उनको तो मौका नहीं है in person. जो भी है उनके जब टाइम आएगा वो खुद करेगा. I think at the moment the world, the youngsters, I think once your family is involved in it now, you बच्चा ऐसे हो जाता है. A lot of people I know that Gen Zs also are very much into Baba, and especially the youth in this country, very much into Baba and his service. I think it's about timing also. When your mind and your heart is ready to go into that zone, तब वो automatically हो जाता है. It comes at times in everyone's life that कितना पार्टी करोगे आप, कितना बाहर जाओगे आप, कितना मस्ती करोगे. It comes to a time you want to become spiritual also. Yeah. So सबके साथ होता है. Even it's amazing. वो दो दुनिया देख ली हैं जो भी ये फॉलो करेगा पूरा पॉडकास्ट. एक तो आपका बॉलीवुड का, अभी ये तो अलग सा स्पेक्ट्रम हो गया. एक और है, आप हारमोनी भी बजाते हैं. हारमोनियम. गाना भी गाते I'm होंगे. a grade 9 in piano, so हारमोनियम बजाना चाहिए था मुझे. अच्छा. I've learned piano at a very high standard. कोई हम लोग फिनिश करने से पहले आप कोई गा सकेंगे जो भी भजन है जो भी बाबा का, so that we can all have that Yeah, as why an not? ending part. Ending part. Let me see Baba's bhajan. What's a nice one to listen to? I'll just sing his bhajan only that he sang in this one night. I think his own bhajan. Manas bhajare Guru Charanam, Dustar Bhava Sagar Taranam. Guru Maharaj, Guru Jai Jai, Sai Nath Sat Guru Jai Jai. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shivaya Namo. Arunachal Shiva, Arunachal Shiva, Arunachal Shiva, Aruna Shivam. Omkaram Bhava, Omkaram Bhava, Omkaram Bhava. Om Namo Baba, Manas Bhajare, Guru Charanam, Dustar Bhava Sagar Taranam. That's bhajan. We composed it. Thank you so much Rajiv. My pleasure, my pleasure. बहुत अच्छा लगा. आप Thank you so much. खुल के बात कर रहे हैं. Thank you खुल so के much. बताएं सब कुछ Thank आपकी you so लाइफ much. में. Thank you so much. We wish only the best for you. Thank you. And जरूर हम फिर से मिलना चाहिए. 100%. बहुत सारे एरियाज है जो हम लोग नहीं कर पाए, टाइम की नहीं, पाबंदी नहीं, है, जरूर करेंगे. पर बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. My pleasure. Thank you so much. Thank and you. all the best.